Assalamu alaikum. Today we discuss the Atlas Honda and in which video we calculate the ratio for the perspective of investment. Firstly, we discuss the introduction of Atlas Honda. Atlas Honda. Atlas Honda owner Atlas Honda owner name Mr. Yusuf H. Shirazi. Founder Chairman Atlas Group of Companies Vision. Atlas Honda Vision, market leader in the motorcycle industry, emerging as a global competitive center of production and export. Mission state, core values. Our core values are derived from group's philosophy, which is based on the Atlas way. Values first, respect, recognition, reward, education and training, value of time, self-realization, and excellence. Product portfolio. First, CD70 Prider so organization chart. Board of director. First, first of chief executive, audit community, human resources and requirement committee, company secretary. Graphical presence. Head office Karachi, registered office Lahore, factories first Karachi, second Sheikhupura. Branch office, customer care center, showroom, Karachi. Board of director, name board of director, chairperson Amir H. Shirazi, director Sanaullah Qureshi, director Abid Naqvi, director Mashhuma Zahra Majid. So, strategy goals and quality policy है about the company and group structure है the glorious riots history so on and go on ratio. First ratio, uh, profitability ratio. Profitability ratio. First ratio, return on ordinary shareholder funds. In which ratio we calculate the return on ordinary share capital means that how much return we earn compared to the ordinary share capital. 2020 this ratio formula profit for the year divided by ordinary share capital plus reserves. 2020 फार्मूला फार्मूले में लगाई है मैंने उसके बाद 2021 2022 the 2020 18.56 21 19.29 22 26.56 values increase 2020 uh, values decrease and 2022 values increase. Second ratio, return on capital employed, in which we calculate how much return compared to the whole capital means equity plus liabilities. This ratio formula operating profit divided by share capital plus reserves plus non-current liabilities. Uh, those are based 2020 values, 25 or 2021 26.19 and 2022 35.49. Third ratio, operating profit margin.
operating profit margin, in which we calculate how much operating profit we earn compared to the total sales revenue. This ratio formula operating profit divided by sales revenue. 2020 ratio 2020 ratio of 5.27, 2021 5.59, and 2022 5.97. Fourth ratio, gross profit margin. This ratio, gross profit margin, shows the how much values of gross profit compared to the sales. This ratio formula, gross profit divided by sales plus revenue multiply 100. uh, 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 सेकेंड लास्ट रेशियो मल्टीप्लाई 100, सो उन सब के साथ मल्टीप्लाई 100 होना है, और इसके ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाई 100. फर्स्ट 2020 आंसर 7.21, और 2021 7.39, 2022 7.49, so values increase. Second ratio, efficiency ratio. Second ratio, efficiency ratio. First ratio, average stock turnover period. Efficiency ratio means give less input and get more output. That is efficiency ratio. First ratio, average, means the turnover, the stock period, and that values show the much days in turnover. First ratio, average stock turnover period. Formula, this ratio formula, average stock held divided by cost of sales multiply 365. 20 though 2029 or 2022 show formula, price, 23.10 days. uh, 2021, so 2020 second ratio, average settlement turnover period. Second ratio, average settlement turnover period. This ratio show the settlement of that period. This ratio formula, trade debtors divided credit sales multiply 365. Basically 365 1 year days. Uh, to is 2 साल values 2019 or 2020. 4.15 days. 2021 4.54 days, or 2022 3.64 days. The third ratio, average settlement period for creditors. बेसिकली दिस बेसिकली ये रेशियो में क्रेडिट की सेटलमेंट को देखते हैं, और ये रेशियो इसको शो करती है. इसका फार्मूला ट्रेड क्रेडिट क्रेडिटेड डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस. इसमें भी दो वैल्यू 2 ईयर्स की लेते हैं, 2019 और 20 की इसकी. और इसमें देखते हैं सेटलमेंट पीरियड क्रेडिटर, जो हम क्रेडिटर को पैसे देते हैं उस देखते हैं कि हम वो कितने दिनों के बाद दे रहे हैं. इसमें 83.39 डेज में वो कर रहे हैं, और सेकंड में 2021 में हम दे रहे हैं 96.89 डेज में, और 2022 में हम दे रहे हैं 88.90 एट मीन्स के 87 डेज में. फोर्थ फोर्थ रेशियो, सेल्स ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. Sales per employee show the value and means the value is per employees sales. Sales to capital formula, this ratio, sales divided by long term capital employed. 2020 4.78 times, 2021 4.68 times, uh, or 2022 5.94 times. Uh, Fifth ratio, sales per employee. Sales per employee, this ratio formula, sales divided by number of employee. 2020 34,447,
2021 37 or 2022. Second, next ratio, liquidity ratio. Liquidity ratio, ability to pay our debt. Liquidity ratio, first type, current ratio. Current ratio formula, current assets divided by current liabilities. Current ratio is in which include the inventory. Uh, 2020 1.454 times. The means 1.54 टाइम ज़्यादा हमारे पास पड़ा है स्टॉक इन्वेंटरी 2021 1.42 टाइम्स 2020 2020 1.545 times. Next ratio, acid test ratio. Acid current ratio. Current ratio in which include the inventory. Second ratio, acid test ratio or quick ratio. Acid test ratio in which not include the inventory. Uh, 20, this ratio formula current asset excluding means minus divided by current liabilities 2020 1.17 times 2021 1.24 times 2022 1.20 times. Next ratio gearing ratio gearing ratio two types. Gearing ratio basically show the how much percent is debt in the whole capital employed. First types gearing ratio formula long term a non current liability divided by share capital plus reserves plus long term non current liabilities multiply 100 2020 6.52%, 2021 6.43%, 2022 5.27%. Second, interest cover ratio. Interest cover ratio show we have able to pay interest. मीन्स के हम किस स्टेज पे हैं कि हम इंटरेस्ट पे कर सकते हैं इंटरेस्ट कवर रेशो दिस रेशो फार्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेएबल 2020 7.78 टाइम्स 2021 82 80 2020 82.90 times 2022 132.08 times. Next ratio, investment ratio. Investment ratio. Investment ratio show investment goes to the shareholders and share stakeholder and shareholder wants just and its return and this return show the dividend. The first type dividend payout ratio. This ratio formula dividend announced for the year divided by earning for the year available for dividend multiply 100. 2020 to 57.10%, 2021 50.15%, 2022 56.32%. Second, dividend cover ratio. Dividend cover ratio
फार्मूला इस रेशियो का फार्मूला है अर्निंग फॉर द ईयर अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिविडेंड अनाउंस फॉर द ईयर फॉर द ईयर 2020 में 1.7 टाइम्स ज़्यादा है, और 2021 में 1.99 टाइम्स ज़्यादा है, और 2022 में 1.78 टाइम्स ज़्यादा है। और नंबर 3 पे है डिविडेंड यील्ड रेशो। डिविडेंड यील्ड रेशो 2020 में 3.30%, और इस रेशो का फार्मूला सॉरी है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाई 100। 2021 का 2.24% और परसेंट, और 2022 का 5.27%। नंबर 4 पे है अर्निंग पर शेयर। पर शेयर अर्निंग पर शेयर इसका फार्मूला है अर्निंग अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर divided by number of ordinary share in issue. 2020 20.52 rupees, 2021 23.96 rupees, 2022 में 37.23 पॉइंट। नंबर 5 है प्राइस अर्निंग रेशियो। दिस रेशियो फार्मूला मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। 2020 2020 का 18.28 टाइम्स। बेसिकली इसके साथ आना है टाइम्स टी टाइम 2020 2020 वन 19.19, 2020 2022 का 10.69 टाइम्स। दिस रेशोज कंप्लीट हो गई हैं। रेशोज को बयान करने का या इनको कैलकुलेट करने का एक ही मकसद होता है कि हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें या ना। अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें फ्यूचर में कितना प्रॉफिट हो सकता है, या हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसमें देखा भी जा सकता है कि जो मैंने कंपनी चूज़ की है एटलस होंडा, बेसिकली का मकसद यही होता है कि हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं। तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए सही है।